So, hello everyone, this is CS Sanidhya Saraf, your friend, mentor, and coach for Audit and Law. And today we are going to revise the Prevention of Money Laundering Act. So, it's a very small chapter, but as far as importance in exam is concerned, this chapter is going to give you a weightage of around 4 marks. राइट सो दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर का जो रिविजनरी वॉइस क्लिप है वो पसंद आया हो, अगर वो आपको बेनिफिशियल लगे, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना कि मुझे इस चैप्टर के वॉइस क्लिप से एडवांटेज मिला या नहीं मिला। राइट सो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जब हम कहते हैं लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है क्लीन करना, यानी समवन who has acquired some money by way of illegal means is trying to convert his illegally acquired money into black money. राइट तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है दैट एनी प्रोसेस और एक्टिविटी जिससे आप क्या करते हो, एनी प्रोसेस और एक्टिविटी जिससे आप बहुत सारा पैसा क्राइम के थ्रू कमाते हो, जिसे हम कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. सो यू अर्न ए लॉट ऑफ मनी बाय वे ऑफ प्रोसेस, बाय वे ऑफ एक्टिविटीज विच इज कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. एंड देन व्हाट यू डू इज दैट you try to conceal the money that you have earned out of illegal means. You try to possess it in an illegal manner, and moreover what you do is you project it as a untainted property. आप उस black money को क्या करते हो? white money के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, और आप ऐसे दिखाते हो that money is a clean money, and that is what we call as money laundering. अब मनी लॉन्ड्रिंग के चैप्टर के अंदर कहा गया है दैट द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज द पर्सन हु असिस्ट हिम इन मनी लॉन्ड्रिंग बोथ आर गोइंग टू बी लायबल. राइट तो सेक्शन 3 डिफाइंस द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग, एंड देन सेक्शन 4 lays down the punishment for the offense of money laundering, which is minimum 3 years of imprisonment. Maximum 7 years of imprisonment and fine. फाइन प्रिस्क्राइब नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि तुमने क्या कांड किया है, कितना कांड किया है. सो अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस करा है, जो इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड है लॉ के अंदर, दैट इज मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 7 years एंड फाइन. एंड अगर जो ऑफेंस आपने किया है, अगर उसका जो रिलेशन है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू नार्कोटिक ड्रग्स, देन द पनिशमेंट शैल बी मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम इट इज गोइंग टू बी 10 years एंड फाइन. So section 3 lays down the definition for money laundering, and section 4 lays down the punishment for money laundering. Now logically we have to understand that there are thousands of crimes in this world, so definitely we are not talking about all the crimes in this chapter. There has to be a list of crimes, there has to be a list of activities कि अगर आप इन criminal activities में से कुछ करोगे तो आप पॉमला में फंसोगे, and that is why there comes a definition of scheduled offense. Now if we talk about the definition of scheduled offense का definition says that there are 3 parts in this schedule. There are 3 parts, that is part A of the schedule, part B of the schedule, and part C of the schedule. So a number of offences are listed in part A number of offences are listed in part B, and a number of offences are listed in part C. And part B of the schedule की खासियत ये है that part B is applicable if the total value involved in the offences is 1 crore or more. अब काफ़ी जन कंफ्यूज होंगे, ये 1 करोड़ कहाँ से आया, क्योंकि काफ़ी बुक्स में ये 30 लाख रुपए है. तो आईसीआई के स्टडी मैट में आप देखोगे तो दिस इज 1 करोड़ रुपीज, और ये अमेंडमेंट आईसीआई 6 महीना पहले ही एप्लीकेबल कर चुका है इन इट्स न्यूली स्टडी मैट. राइट तो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी का ऑफेंस अगर आपने किया है उसे शेड्यूल्ड ऑफेंस कहते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेडिकेट ऑफेंस, एंड दैट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. सो नाउ व्हाट यू हैव डन बेसिकली इज दैट, व्हाट ए मनी launderer has done basically is that he has earned a lot of money by way of proceeds of crime, and he has crime कौन सा, he has done the crime that is given in the scheduled offenses का list, part A, part B and part C, and he has acquired some property, and that property can be movable, property can be immovable, that property can be tangible, intangible, in India or outside India, कुछ भी हो सकता है. अगर हम प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मेनली 3 स्टेजेस होते हैं. वन इज द प्लेसमेंट स्टेज, वेयर द मनी लॉन्ड्रर प्लेसेस द मनी इन द फाइनेंशियल सिस्टम. देन वी हैव द लेयरिंग स्टेज, जहां पे वो क्या करता है, ही ट्राइज टू कंटिन्यूअसली कन्वर्ट द फंड्स सो दैट ही कैन हाइड द ट्रू ओरिजिन ऑफ द मनी. एंड थर्ड इज द इंटीग्रेशन फेज, कि भाई मैंने प्लेसमेंट कर दिया, मैंने लेयरिंग कर दी, अब मैंने जहां जहां प्लेस किया था उन सब चैनल से मैं क्या करूंगा, पैसे मंगा लूंगा, एंड देन आई एम गोइंग
to invest the money in the real estate business, in the luxury assets, in Bollywood or something like that. Right. And finally that asset, what is going to be is that that asset will become my untented property. मैंने क्या किया, black money से white money में कन्वर्ट कर लिया. राइट. अब इस चैप्टर के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज गोइंग टू एंजॉय अ वैरायटी ऑफ पावर्स. लाइक ही इज नॉट ओनली गोइंग टू गेट द नॉर्मल पावर्स ऑफ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, but also he is going to get the advanced level powers like search, like seizure, like arrest. जी हाँ, arrest is also possible. Search, seizure, arrest, all those powers he is going to get. And he is also going to get the powers of provisional attachment of property. Provisional attachment of property का भी powers उसको मिलने वाला है. अब logically आप एक चीज सोच के बताना. Tell me one thing, that if we talk about this Prevention of Money Laundering Act, who are the authorities who are most capable of stopping such kind of activities? तो हम बोलेंगे the banks or financial institutions. That is why Section 12 of Prevention of Laundering Act lays down certain obligations upon the banks or financial institutions, and जो technical word use करते हैं हम for the banks and financial institutions, that is we use reporting entity. तो जो reporting entities हैं उनके ऊपर कुछ obligations हैं. That is, if you have seen, all the banks do maintain KYC norms. Now that KYC norms is because of the requirement of Money Laundering Act, right? So every time you attempt a transaction, further कहा गया कि every time you attempt a transaction, तो क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर्टन लिमिट सेट करती है, और जब भी आप ट्रांजैक्शंस की वैल्यू उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो उसका इंटीमेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जाता है. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. सिमिलरली द बैंक्स व्हाट दे डू इज दैट इवन इफ यू हैव क्लोज्ड योर अकाउंट, अगर आपने अकाउंट बंद भी कर दिया है उसके बाद भी दे मेंटेन योर अकाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. फर्दर बैंक्स क्या करती है, थॉरो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करती है आपका इन सच ए मैनर दैट जब भी जरूरत पड़े दे में आइडेंटिफाई हु द बेनिफिशियल ओनर इज. तो केवाईसी नॉर्म्स मेंटेन करना, अकाउंट बंद होने के बाद 5 years तक अकाउंट मेंटेन करके चलना, देन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस यू हैव अटेम्प्टेड. ऑल दोज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, जो कि सेक्शन 12 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दिया गया है. नाउ लॉजिकली अगर हम बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस. एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स द ऑफेंस जहां पे आपको बेल नहीं मिलता है जल्दी से, विच आर नॉन बेलिएबल ऑफेंसेस. नाउ PMLA comes under the category of cognizable offences. Section 45 of the Act states that PMLA comes under the category of cognizable offences, and special courts are constituted to handle such kind of offences. Right? And now because PMLA comes under the category of cognizable offences, कहा गया है that any person accused under PMLA shall not be released on bail. जल्दी से bail नहीं मिलेगा. But however, there are certain exceptions when the special court can release such a person on bail. That is, if the age is less than 16 years of age, if the age is less than 16 years of age, या फिर if the accused is a woman, या फिर if the accused is a sick or infirm person, or when the person accused along with the others person who are accused are liable for a fraud, money laundering activity of less than 1 crore rupees, up to 1 crore rupees. तो एक खोखा तक का कांड है तो बेल मिल सकता है, वुमेन को बेल मिल सकता है, सिक या इन्फर्म पर्सन को बेल मिल सकता है, या फिर if my age is less than 16 years I can be granted a bail. सेक्शन 45 के अंदर ये सारी चीजें कवर्ड हैं. राइट. एंड फाइनली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर वी ऑल्सो हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अपील्स. सो व्हाट हैपेंस इज दैट, सबसे पहले ध्यान रखना, स्पेशल कोर्ट्स कंस्टिट्यूट किया गए हैं. स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन कंस्टिट्यूटेड टू हैंडल द मैटर्स ऑफ PMLA फॉर अ स्पीडी ट्रायल. नाउ द फर्स्ट ऑथोरिटी दैट कम्स इनटू पिक्चर इज द एडजुकेटिंग ऑथोरिटी. एडजुकेटिंग ऑथोरिटी क्या करता है, एडजुकेटिंग ऑथोरिटी PMLA में फैसला सुनाता है. नाउ अगेंस्ट द एडजुकेटिंग ऑथोरिटी वी हैव द एपलेट ट्रिब्यूनल, एंड अगेंस्ट द एपलेट ट्रिब्यूनल वी हैव द हाई कोर्ट. यानी देयर आर 3 layers ऑफ ऑथोरिटी अंडर PMLA. वन we have is adjudicating authority, second we have is appellate tribunal, and the third we have is high court. Now कभी भी अपील के चैप्टर के अंदर अगर आपको हायरार्कीज पता है, टाइम पास तो आप कर ही दोगे. फॉर एग्जाम्पल what the adjudicating authority is going to do is that it is going to hear both the parties and accordingly give an order. Now if the person is not happy, he is aggrieved with the order of adjudicating authority, he may make an appeal to the appellate tribunal within 45 days. Now the appellate tribunal is going to give an opportunity of being heard to both the parties and follow the principle of audi alteram partem.
and the appellate tribunal, after hearing both the parties, is going to give an order, and the copy of the order shall be communicated to both the parties. And now if the aggrieved person is aggrieved with the order of appellate tribunal, the appeal will be made to the high court within 60 days. And again the high court, what the high court will do is that the high court will consider the representation of both the parties, and the decision made by the high court shall be final and binding in this case, right? So these are the important provisions that we need to remember in this chapter, Prevention of Money Laundering Act. The important section numbers that you need to remember in this chapter are Section 3 Definition of Money Laundering, Section 4 जो कि penalty की बात करता है, Section 12 जो कि obligations of banks and financial institutions की बात करता है, Section 45 that talks about nature of offences, and Section 43 to 47 which talks about the provisions of that is the special court, right? तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, राइट? सो अगेन बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, 4 मार्क्स आप बिल्कुल लूज ना करें, राइट? ये वॉइस क्लिप सुनने के बाद फटाफट क्या करें, अपने आरटीपीज, अपने एमटीपीज, ये सारा कुछ आप रेफर कर लें, जो भी क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर रहे हो, यूज दैट क्वेश्चन बैंक फॉर योर प्रैक्टिस, एंड द आरटीपीज, द एमटीपीज, एवरीथिंग यू मस्ट डू, राइट? एंड दोस्तों आज आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं बहुत ही दिल से आज एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, दैट इज़ मुझे नहीं पता यार तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा दिया था, आई डोंट नो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा है, लेकिन हर कोई अपनी दिमाग में एक बात बांध ले कि मुझे नहीं पता मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा दिया था, लेकिन जो आने वाला अटेम्प्ट है वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। जी हाँ, मुझे नहीं पता कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा दिया था, लेकिन जो आने वाला अटेम्प्ट है वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। जो भी करना बनेगा मैं करूँगा, लेकिन आई विल मेक श्योर कि जो आने वाला अटेम्प्ट है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। एक छोटा सा एडवाइस और दूंगा दोस्तों, दैट इज़ मेक श्योर, याद रखना ऑडिट एंड लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑरल स्टडी से काम नहीं चलेगा, रिटन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। मेक श्योर दैट यू विल डू अ लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस, आप बहुत सारी रिटन प्रैक्टिस करें, राइट? मेक श्योर कि आप बहुत सारी रिटन प्रैक्टिस करें। एंड रिटन प्रैक्टिस के अलावा हमारा जो अपना मेंटर का टेस्ट सीरीज़ है, अपना मेंटर का टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर एनरोल कराना, जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि हर सब्जेक्ट के अंदर वी हैव मैनी चैप्टर वाइज टेस्ट। लॉ के अंदर वी हैव 9 चैप्टर वाइज टेस्ट, 200 मार्क्स टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट हैं 25 मार्क्स के, 2 टेस्ट हैं 100 मार्क्स के। सिमिलरली 8 के 8 सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, एंड द टीम इज़ वेरी गुड, द इवैल्यूएशन इज़ वेरी गुड, एंड दैट इज़ really going to help you out, and that is going to be a game changer for you to become a chartered accountant. So do enroll the test series, that is going to help you a lot. And अगर ये voice clip आपको पसंद आया हो, मुझे मैसेज ज़रूर करें। All the very best.